नो पेन। थैंक यू। चलिए कहाँ तक पढ़ लिया हम लोगों ने? फ्लावर पढ़ना चालू किया था शायद। पार्ट्स ऑफ फ्लावर हो गए थे। ओके, तो नाउ आप लोग सब फ्लावर के डायग्राम लोग ड्रॉ करवाए, डायग्राम देखिए आप लोग सब जो हम लोगों ने लिखा था फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। क्या लिखा था? फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। कैसे? तो वी हैव स्टेम, और स्टेम के ऊपर से नोड्स होते हैं। दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं इंटरनोड्स। क्या बोलते हैं? इंटरनोड्स। तो व्हेन यू रिड्यूस दैट इंटरनोड, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्रेस्ड नोड, है ना? मतलब दो नोड्स के बीच जो डिस्टेंस था वो बहुत कम हो गया था इस तरीके से। दिस इज द अर्लियर सिचुएशन, बट आफ्टर कंप्रेसिंग इट, इट लुक्स लाइक दिस। और फिर हर एक नोड से हमारे लीफ निकल रहे हैं, है ना? नोड इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर ब्रांच अराइजेस और लीफ अराइजेस, और वही लीफ हमारे मॉडिफाई हो गए पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सो मेनली देयर आर 4 वॉल्स इन फ्लावर। कितने वॉल्स होते हैं फ्लावर में? 4। और इस वॉल का जो मीनिंग है वो समझना है सभी को। इन द फ्लावर देयर आर हाउ मेनी वॉल्स? 4 वॉल्स। So this whorl, what is the meaning of that? So whorl मतलब होता है सर्कल। सर्कल जानते हैं आप लोग? हाँ। So when a circle is made by multiple single units, when a circle is made by multiple single unit, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बॉटनी की भाषा में? whorls। क्या बोलते हैं? whorls। अब मैं सुनाऊँ ना, whirlpool सुना आप लोगों ने? कंपनी का नाम है ना? हाँ, वेरी गुड। तो whirlpool में क्या होता है? वो बाउंड्री जैसा बनता है पानी का। अब उन्हें बाल्टी में कभी से हाथ से, if you rotate it continuously, then there is formation of whirlpool. Yes or no? From there only this word comes whirl। मतलब whirl मतलब क्या है? सर्कल। तो फ्लावर के अंदर सर्कल्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने कोई भी फ्लावर देखा होगा, if you have seen sunflower, rose, है ना, विनका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आते हैं। तो कोई भी आप फ्लावर देखो उसमें, तो जो पेटल्स है वो पेटल्स कैसे अरेंज होते हैं? दे आर अरेंज इन अ circle. Yes or no? So that arrangement in a circular pattern, arrangement in a circular pattern, that is known as what? Whorl. So there are how many whorls in flower? 4. How many whorls are there? 4. तो 4 whorls में सबसे पहले जो whorl आता है उसका नाम है calyx। क्या नाम है पहले whorl का? calyx. So calyx is the green part of the flower which is responsible for photosynthesis। अगर green part है उसके अंदर photosynthesis करने की ability होगा, because it has the pigment known as chlorophyll। कौन सा pigment है? This calyx is made up of sepals। तो calyx is larger unit and sepal is a smaller unit। तो एक इंडिविजुअल जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लावर के अंदर उसको बोलते हैं हम लोग सेपल। लेकिन जब सेपल सारे आपस में मिल जाते हैं, 4 5 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो वो जो सारे सेपल्स आपस में मिलके एक वॉल बनाते हैं, उस वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स। So sepals all together are called as calyx, and individually they are called as what? Sepal। Second wall आपका आता है corolla। Second wall क्या है? Corolla। So corolla का जो सिंगल यूनिट है that is petal। सिंगल यूनिट कौन है? petal। And this is the colorful part of the flower। Why colorful? Because it has, आपने पढ़ा होगा सेल चैप्टर के अंदर कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं, याद है आप लोगों को? हाँ। सो यू हैव स्टडीड इन क्रोमोप्लास्ट, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, वही पिगमेंट होता है कैरेट के अंदर, जिसके कारण कैरेट कौन सा अपीयर होता है? कलर ऑरेंज। यस और नो? सो दिस प्लास्टिड when it is present in form of chloroplast, sorry chromoplast, कौन से फॉर्म में? क्रोमोप्लास्ट। तो इट गिव्स मल्टीपल कलर्स। आपने कई बार लीव्स भी देखे होंगे, कोई लीव्स ब्राउनिश कलर के होते हैं, ठीक है लोगों ने? some leaves are purplish in color, है ना? some kind of leaves you have seen। so these leaves का जो कलर है वो कैसे आ रहा है? because of presence of क्रोमोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट है उनके अंदर? क्रोमोप्लास्ट। तो कई बार जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा होगा चिली का,
तो चिली स्टार्टिंग में कैसा होता है, ग्रीन, देन इट बिकम्स रेड। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस हाउ, जब ग्रीन है तो उसमें कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, बट व्हेन इट बिकम्स रेड देन दिस क्लोरोप्लास्ट बिकम्स व्हाट, क्रोमोप्लास्ट। पढ़ा होगा आप लोगों ने सेल चैप्टर में, वेरी गुड। तो दिस कोरोला हैज क्रोमोप्लास्ट, क्या है कोरोला के अंदर, क्रोमोप्लास्ट। दिस इज द वर्ल, कोरोला इज द वर्ल, और जो सिंगल यूनिट है कोरोला का उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेटल। एंड दिस इज मेंट टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, किसको अट्रैक्ट करना है, एक बहुत सारे इंसेक्ट आपने देखा होगा, भंवरे देखे होंगे घूमते हैं, हनी बीज, मैनी बम्बल बीज आर देयर। तो ये जो बीज है वो बीज फ्लावर से अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस पेटल्स, एंड ऑफ कोर्स देयर आर फ्रेग्रेंसेस, साथ ही साथ नेक्टर प्रेजेंट होता है फ्लावर्स के अंदर, तो आप लोगों ने सर, हाँ, एंड दैट नेक्टर इज कलेक्टेड बाय बीज, और उसी से वो बनाते हैं अपना छत्ता, है ना, मधुमक्खी का छत्ता, सुना होगा आप लोगों ने। Right. तो फर्स्ट वर्ड इज Calyx, second word is corolla. Now both of these words are non-essential words. ये दोनों ही वर्ड्स कैसे हैं, नॉन इसेंशियल, मतलब कि ये इतने जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, इनके बिना भी फ्लावर का जो मेन पर्पस है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फ्लावर, इट इज अ मॉडिफाइड शूट फॉर reproduction. So without these two worlds of flower also, flower can undergo reproduction. Therefore these two words are known as what, non essential words. ये दोनों words कहते हैं non essential. Now the third word that comes out is androecium. and third word क्या है, androecium. अब याद रखना andro word जो है वो लैटिन में उसका मतलब क्या होता है, हमेशा मैन। एंड्रो का मतलब क्या होता है, मैन। सो व्हेनेवर यू फाइंड दिस वर्ड एंड्रो इन बायोलॉजी, मतलब वो किसके बारे में बात हो रही है, मेल पार्ट, है ना, मैन के बारे में बात हो रही है, मेल पार्ट के बारे में। सो एंड्रोस्टियम इज मेड अप ऑफ स्टेमेन। अगेन एंड्रोस्टियम इज अ वॉल, और उस एंड्रोस्टियम के अंदर जो सिंगल यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमेन। और ये स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया अपनी किताब के अंदर, तो ऐसे फिलामेंट लिखा है नीचे, हाँ, तो दिस इज द फिलामेंट, और ऊपर जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, एंथर। These two together comprises and called as stamen. Anther और filament दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, stamen. Fourth, एंड्रोशियम के बाद फोर्थ क्या आता है, गायनोशियम। तो गायनो का मतलब होता है फीमेल या वुमेन। तो गायनोशियम का यूनिट क्या है, कार्बन, और कार्बन का दूसरा नाम क्या है, बट मोर अप्रोप्रिएट वर्ड इज कार्बन, है ना। आप लोग पढ़ोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल के अंदर तो वहां आपको 12th में आएगा, जैसे डिफरेंट बिटवीन कार्बन एंड क्रिस्टल, तो बेटर वी कॉल इट एज ओनली कार्बन नाउ। So carbon is the single part of gynoecium. और कार्बन किससे बना है? Who knows the parts of carbon? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये आपका हो गया स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, और ये क्या है, सोलन पार्ट, ओवरी। तो स्टिग्मा वो रिसेप्टिकल है, रिसेप्टिव साइट है जहां पर पॉलन ग्रेन्स आकर लैंड करते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स कम्स आउट फ्रॉम एंथर, है ना, ये एंथर के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन्स, किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स एंथर से बाहर निकल के थ्रू एयर, थ्रू विंड, थ्रू एनिमल, है ना, मल्टीपल एजेंट्स के द्वारा कहां पहुंचते हैं, अल्टीमेटली स्टिग्मा, दे रीच टू स्टिग्मा, एंड आफ्टर जर्मिनेशन दे फॉर्म अ पॉलन ट्यूब, और वो पॉलन ट्यूब यहाँ पे ओवल के अंदर आया करता है फर्टिलाइजेशन। हमने ड्रॉ किया होगा, देखो डायग्राम में अपने, ओवरी के अंदर हमने ओवल ड्रॉ किया यहाँ पे, हाँ, yes or no? So stigma is the site where who lands? कौन आके टपकता है? कौन टपकता है? Pollen grains। और इस स्टाइल में से वो ट्रेवल करता है, और नीचे ओवरी क्या है? Solar basal part of the carpet where fertilization takes place। है ना, सभी को। So these are the main four walls of the flower। अब उसी के नीचे आप देखो तो आपको लिखा है एक सोलर पोर्शन, आपने सर डायग्राम ड्रॉ किया होगा, इसको लिखा है आपने थैलेमस, दिखा है इसको, हाँ। तो थैलेमस क्या है, तो अभी देखो ये चार वॉल्स है, तो ये चारों वॉल्स फ्लावर के अंदर हवा में उड़ रही थी, नो, दे ऑल आर सिचुएटेड ऑन दिस थैलेमस। जैसे आप लोग बैठे सीट पे बैठे हो कि हवा में बैठे हो आप लोग, यू ऑल आर सिटिंग ऑन द बेंच और द सीट, यस और नो। So the same way flower is sitting on this
सीट, तो फ्लावर का सीट उसके हिसाब से, आप लोगों का सीट आपके हिसाब से, बेस्ड ऑन योर, हरे कृष्ण। सो receptacle is the receptacle is the seat where all the four valves are situated, है ना। हाँ, तो थैलेमस का दूसरा नाम क्या है? सॉरी, थैलेमस का दूसरा नाम क्या है? रिसेप्टेकल। थैलेमस और रिसेप्टेकल, हरे कृष्ण सभी को। एंड देन द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज नोन एज, क्या लिखा आप लोगों ने? स्टॉक ऑफ द फ्लावर, पेडिसिल। यस और नो? ये लिखा है ना? लिखा है आप लोगों ने? तो लिखिए, और स्टॉक जो है ना, फ्लावर का स्टॉक, फ्लावर के स्टॉक को बोलते हैं हम लोग। लिखे तुमने? तुमने कैसे लिखे? बुक में से लिखा हो। स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज नोन एज व्हाट? पेडिसिल। है ना क्लियर सभी को? और लास्ट आपने देखा होगा नीचे लीफी स्ट्रक्चर बनाया आप लोगों ने, दिख रहा है सभी को? हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रांच। लीफी स्ट्रक्चर, मेरे पीछे बोलिए, लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट at the base of pedicel, that is the stalk of flower, is known as bracts. तो ये जनरली ब्रैक्ट ग्रीन कलर का होता है, किसी किसी में ये ब्रैक्ट कलरफुल भी होता है। जैसे हम लोगों ने बोगन में लिया था, डायग्राम फोटो दिखा था आपको प्लांट का, बोगन में दिखा था ना आप लोगों ने? हाँ, तो ये जो आप, ये जो लीफी स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, लीफी स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट फ्लावर, दिस इज प्लांट। कौन है ये? प्लांट। फ्लावर इसके अंदर आपको दिख रहा है, ये पर्पल कलर के तीन ऐसे दिख रहा है आपको ये? हाँ, सो दीज आर फ्लावर्स। क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर 100% ऑफ है। अरे तुम लोग शांति से बैठो। So these are black, colorful black। कैसे black है ये? कलरफुल, है ना। तो इसको फ्लावर नहीं समझना, ये पिंक कलर दिख रहा है, पिंक कलर का फ्लावर नहीं है ये फ्लावर यहाँ पे जो पर्पल कलर का रेड कलर आपको दिख रहा है, इट इज मैरून कलर। मैरून कलर जानते हैं आप लोग? मैरून कलर, हाँ, टाटा ने जो शर्ट पहनी वो मैरून कलर है। What nonsense! कुत्ते बिल्लियों की तरह चिल्लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। Behave like a gentle student। हरे कृष्णा। एकदम चुप। वेरी गुड, हेडिंग डाली आप लोग अभी। Some important terms, some important terms related to flower। सबसे पहली चीज, कंप्लीट फ्लावर। क्या है पहला टर्म? क्या है? कंप्लीट फ्लावर। तो जब किसी फ्लावर में सारे वर्ड प्रेजेंट हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट फ्लावर। When it has calyx also, corolla also, androecium also and gynoecium also। जब चारों के चारों वर्ड प्रेजेंट है तो फ्लावर को क्या बोला जाता है? कंप्लीट फ्लावर। तो लिखिए, when all words are present। इफ नाउ सपोज कोई एक वर्ड एब्सेंट है, या तो कैलिक्स, या तो कोरोला नहीं है, या तो
एंड्रोशियम है तो गैनोशियम नहीं। अगर कोई भी वर्ब एब्सेंट है तो फ्लावर कैसा कहलाएगा? इनकम्प्लीट। फ्लावर बी कॉल्ड एज इनकम्प्लीट। सो व्हेन anyone word is absent. सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है मेल फ्लावर। 2 मिनट सुन लीजिए। सो मेल फ्लावर इज जब एंड्रोशियम और गायनोशियम में से गायनोशियम एब्सेंट, कौन एब्सेंट है? गायनोशियम। तो बताइए गायनोशियम फीमेल पार्ट है, प्लांट फ्लावर है कि मेल पार्ट है? गायनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। So if gynoecium is absent, then the flower is known as what? Male flower. So now female flower क्या हो जाएगा बताओ? What will be female flower? Androecium is absent. Only gynoecium is present. Very good. पानी अंदर चला गया ऊपर से डाला शर्मा पार्टी लिख ले सभी ने इतना। इतने 4 टर्म्स क्लियर है सभी को? कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, फीमेल फ्लावर एंड मेल फ्लावर। नाउ फिफ्थ टर्म इज स्टेमिनोड। So stamens which are sterile do not produce कल एग्जाम आप लोगों का परसों है? कौन सा है परसों? अच्छा थैंक यू। तो 2 मिनट सुनिए सभी लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेमिनोड? तो स्टेमिनोड्स ऐसे स्टेमन्स को बोलते हैं जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करते। दे आर नोन एज स्टेराइल स्टेमन। क्या बोलते हैं इनको? स्टेराइल स्टेमन। दोस स्टेराइल स्टेमन्स आर नोन एज व्हाट? स्टेमिनोड्स। तो सभी ने। नाउ नेक्स्ट टर्म इज प्राइमरस फ्लावर।
2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट समझ लो आप लोग। तो ट्राई मतलब क्या होता है? 3 है ना। ट्राई मतलब 3। और MER मर मतलब क्या? मर जाओ ऐसे। सो MER मर मतलब जैसे लोगों ने सुना है पॉलीमर। So what is the meaning of MER मर there? Poly means many. MER मर मतलब मर मतलब होता है यूनिट पार्ट, है ना। मोनोमर मतलब सिंगल पार्ट। पॉलीमर मतलब कि मेनी पार्ट्स। सो ट्राइमर मतलब 3 पार्ट्स। सो व्हेन इन अ फ्लावर, ध्यान से सुनना सभी, व्हेन इन अ फ्लावर all the whorls have units either 3 or in multiples of 3. When all whorls of flower have units either 3 or in multiples of 3, मतलब कैलिक्स के अंदर जो सेपल्स है, या तो 3 सेपल्स होंगे, या तो 6 सेपल, या तो 9 सेपल, या तो 12 सेपल्स। तो ये तो 3 या तो किसके मल्टीपल्स में ही है? 3 के मल्टीपल्स में। कोरोला के अंदर पेटल्स हैं, लेकिन पेटल्स कितने हैं? either 3, 6, 9 or 12, like this. So when stamens also same for carpel also. जब सारे parts of flower किसके मल्टीपल में है? either 3 और in multiple of 3, तो फिर उस फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइमेरस फ्लावर। अगर 4 के मल्टीपल में होगा तो क्या बोलोगे आप उसको? टेट्रामेरस फ्लावर। और अगर 5 के होगा तो क्या बोलोगे उसको? पेंटामेरस। तो नाउ मोनोकॉट्स जनरली हैव ट्राइमेरस फ्लावर। कितने लोगों ने अनियन का फ्लावर देखा है? वेरी गुड। तो अनियन की फ्लावर आप देखोगे जिसमें आपको 3 पेटल दिखेंगे। यू हैव सीन ऑर्किड? ऑर्किड है ना, ऑर्किड शादी में जनरली बहुत सजाते हैं ऑर्किड। पर्पल और व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। हाँ, सो दीज ऑर्किड्स आर आल्सो मोनोकॉट्स। सो मोनोकॉट्स में जनरली कैसे फ्लावर्स होते हैं? प्राइमर्स। एंड डाइकॉट्स आर जनरली टेट्रामेरस और पेंटामेरस। याद रखना आपको। मोनोकॉट्स में कौन से फ्लावर्स होते हैं? ट्राइमेरस। और डाइकॉट्स में टेट्रामेरस और पेंटामेरस। वेरी गुड, लिख लीजिए ट्राइमेरस। मैं वेट बिल्कुल नहीं करने वाला, बता दे रहा हूँ। तुम ये बातें करते रहोगे ना फालतू की, आई विल राइट डाउन वेरी फास्ट। चुपचाप बैठो तुम लोग, बाजू बाजू बातें करनी है फिर। क्या हुआ? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हैं। मतलब मैं आपको रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। क्या बोला सर? अभी तो बोलना बेटा, मैं कुछ बोला नहीं।
रानी के लिए बोला पेंटिंग सारे नॉनसेंस क्या बोला तुम? ऐसा बोलो सर ऐसा शायद तुमको डोज मिलने वाला है, तुम चलो रास्ता कैबिनेट बैठे, रास्ता को बोलता हूँ मैं ये सर अब बिल पे फाइल नोट ये तो मैंने now next is symmetry. कितने मार्क्स में पर आप लोगों का अभी 70? ये मतलब पहले पता चल जाता आप लोगों में इंग्लिश कौन पढ़ाता है आप लोगों को? तुमको हाँ आरती मैम राकेश सर बोल रहे बच्चे लोग राकेश सर ये तो लोग RMD कॉलेज का मतलब पढ़ाई एडमिशन लिए वॉट एवर इट इज हाउ मेनी आर देयर प्लीज रेज योर हैंड 1 2 3 ओके ठीक बहुत सारे हैं और बधे के कितने लोग हैं बधे जो भी है बधे रहते और अपने घर से जो लोग कर रहे हैं कितने हाउ मेनी आर देयर फ्रॉम देयर होम नॉट योर टाउन नाउ तो बात है क्या तो पूछा था तुमसे हो गया ना ये बेटा हाँ ये बिल्कुल निकलना नहीं चाहिए मुंह से सर आगे बहुत क्वेश्चन के लिए मोटा करेंगे सर नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्री इन फ्लावर तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है बताइए सिमेट्री इज a line what is symmetry is a line now this line divides any object into two equal parts उसको बोलते हैं क्या symmetry is a line which divides any object into two equal parts now this symmetry in flowers is of mainly three types एक होता है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री लिखना नहीं अभी समझना है पहले जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री और तीसरा है एक सिमेट्री so now you all have seen फ्लावर्स लाइक किन लोगों ने मटर का प्लांट देखा है पी का you all have seen so there are blue color flowers
ब्लू कलर फ्लावर देखे आप लोगों ने? इस तरीके से कुछ सर पोटैटो को so this flower you are seeing blue color flowers. So ये जो flower है, this flower, all of you stand up. All of you stand up and remain stand. Remain in this position whenever I don't see. अगर आप किसी ने बात करी, I will make you out of the class. सुनो दोस्तों, अभी सारा कोई ऐसा उल्टा चलो तुमने बोला ये वो कर रहा है, तुमको से तुम्हारा ध्यान देना है, तो चलो तुम ही जाओगे दरवाजे के पास. तो हमारे पास तीन सिमेट्री है. फर्स्ट इज एक्टिनोमॉर्फिक, सेकंड इज जाइगोमॉर्फिक एंड थर्ड इज एसिमेट्रिक. तो जाइगोमॉर्फिक दिस इज द पी प्लांट. पी प्लांट का जो फ्लावर है ब्लू कलर का फ्लावर है. यहाँ पर आप फ्लावर को केवल एक ही प्लेन से कट कर सकते हो. देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. उसके अलावा दूसरा कोई लाइन सिमेट्री का नहीं है. अगर आप किसी और से ट्राई भी करोगे तो दो इक्वल पार्ट्स में फ्लावर कट नहीं होगा. लेकिन यहाँ पर लोग फ्लावर देख रहे हैं, इट इज वेरी कॉमन फ्लावर. कनेर आप लोगों ने देखा होगा. कनेर इज ऑल्सो एग्जाम्पल. You all have seen बारहमासी विंसिया फेबियम. इनका फ्लावर देखा आप लोगों ने? So this flower can be cut into two equal parts from multiple planes. Yes or no? है ना? इस फ्लावर को आप मल्टीपल प्लेन से टू इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं. तो दिस फ्लावर हैज विच सिमेट्री? एक्टिनोमॉर्फिक. कौन सा सिमेट्री यहाँ पे? एक्टिनोमॉर्फिक. लेकिन जो पी प्लांट लिखा है आपको, तो पी प्लांट के अंदर जो सिमेट्री है, ये कौन सा सिमेट्री है? जाइगोमॉर्फिक. एंड देयर आर सम फ्लावर्स व्हिच डू नॉट हैव एनी सिमेट्री. इसका एग्जांपल है कैना. इट इज अ फ्लावर वेरी सिमिलर टू लिली. अगर लिली का फ्लावर आपने देखा हो कभी, सो कैना फ्लावर हैज, ये आप लोगों ने देखा होगा कैना. So these flower does not have any symmetry. So they are known as asymmetric flower. that's how बोलना है इनको, asymmetric flower. तो हेडिंग लिखते सभी ने सिमेट्री लिखिए. फर्स्ट एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री. Actinomorphic symmetry. When a flower, when a flower is divided into two equal parts, when flower is divided into two equal parts, when flower is divided into two equal parts, when a flower is divided into two equal parts from multiple planes, from multiple planes, from multiple planes, PLANES, from multiple planes, it is known as actinomorphic symmetry. It is known as actinomorphic symmetry. It is known as actinomorphic symmetry or radial symmetry. Actinomorphic symmetry or radial symmetry. RADIAL, radial symmetry. Next, zygomorphic symmetry. Next, बेटा इसमें एडजस्ट कर लो तो ऐसी पोजीशन में आओगे ना तुम.
Zygomorphic symmetry. Next, when a flower is divided, when a flower is divided into two equal parts, when a flower is divided into two equal parts, when a flower is divided into two equal parts from only a single plane, from only a single plane, from only a divided into two equal parts from only a single plane, that is known as zygomorphic symmetry. That is known as zygomorphic symmetry. गर्ल्स सारी बैठ जाएंगी, बॉयज बेटा सारा तो वो कोई बोलने के लिए बोल रहा है सामने तुम्हारा कोई तो देखा तो बोलोगे तुम, देखा तो बोलोगे तुम ना, देखा तो बोलोगे तुम। जब तक तुम लोग ऐसे बिहेव करते रहोगे ना बॉयज, ऑल यू विल स्टैंड। हरे कृष्णा। थर्ड asymmetric flower. Third asymmetric flower. Third asymmetric flower. Third asymmetric flower. When flower does not have any plane of symmetry, when flower does not have any plane of symmetry, when flower does not have any plane of symmetry, ना तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, asymmetric। हाँ, जाइगोमॉर्फिक का दूसरा नाम है बाइलेटरल सिमेट्री। लिख लीजिए, जाइगोमॉर्फिक का दूसरा नाम क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। तो एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग, एक्टिनोमॉर्फिक में विनका, जाइगोमॉर्फिक में पी और एसिमेट्रिक में कैना। These are the examples of flower. एक्टिनोमॉर्फिक में एग्जांपल है विनका, जाइगोमॉर्फिक में पी और एसिमेट्रिक में कैना। दस लिखे सभी ने? Now next topic. Done सभी का? So now position of balls with respect to thalamus. Now it is of देखो, जब तक बॉयज तुम्हारे आवाज आती रहेगी ना, तब तक तुम लोग ऐसे ही हर क्लास में खड़े रहोगे, बता देता हूँ मैं। So it is very good for you to be very very silent, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, अपना अपना जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको लिखो। 5 minutes 10 minutes if you will stand quietly, आपको बैठा दूंगा। आप लोगों ने बातें करते रहे, कंटिन्यूसली हंसी मजाक चालू किया, कमेंट पास करना चालू किया, तो आप लोग ऐसे ही खड़े रहोगे हर क्लास में, मैं बता दे रहा हूँ। And I literally don't care about anything in my life, anything. When it comes to, when I'm a very short-tempered person sometimes, so therefore I'm telling you, थोड़ा सा हमने मस्ती किया, मैं खुद कुछ नहीं होने वाला है, जॉब जाएगी, कुछ भी जाएगी, और पेरेंट्स वेलकम, whatever happens, I do not care for anything, है ना? So I'm telling you, if you do mischief like this, आप लोग की हंसी बंद नहीं हुई, in every class for one boy, whole boys, all the boys will stand like this। आरुष खड़ा जाओ बेटा, बैठना नहीं अपने को, है ना?
तो पोजीशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू थैलेमस, तो सबसे पहले आता है एपिगाइनस। करो करो बातें करो तुम लोग, लिखना नहीं 2 मिनट अभी, समझना है। पेरिगाइनस, एपिगाइनस एंड हाइपोगाइनस। नाउ चलो आंसर निकालिए फटाफट, आंसर निकाले सभी ने। हाँ तो सी सिमेट्री, सबसे पहले सिमेट्री कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, एक्टिनोमॉर्फिक। अनदर टाइप ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में फ्लावर कैन बी कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऑफ मल्टीपल। सेकंड इज जाइगोमॉर्फिक, दूसरा नाम क्या है उसका, बायलैटरल सिमेट्री, व्हेन अ फ्लावर कैन बी कट इनटू इक्वल पार्ट्स ऑफ ओनली सिंगल ग्रेन। और थर्ड है एसिमेट्री। सो एक्टिनोमॉर्फिक के 3 एग्जांपल है, मस्टर्ड, दतुरा और चिली। दतुरा आप लोगों को पता होगा, शिव जी को चढ़ाते हैं। मस्टर्ड सरसों, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, सारा नीचे बैठे बैठे। और चिली और उधर जाओ उससे, उसको ऊपर बैठना नहीं है। तो 3 एग्जांपल, मस्टर्ड, दतुरा एंड चिली। वेरी गुड। यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक में पी, गुलमोहर, you all have seen, yeah. B is very similar to pea lily and cassia. Cassia is orange color flowers, you all have seen very commonly. ये फ्लावर देखे आप लोगों ने, very commonly you will find on the road. करो करो तुम लोग, हाँ हाँ हूँ। वेरी, so cassia is which type of symmetry? Zygomorph. कौन सा symmetry है? Zygomorph. So these examples you add in your notes. ये सब example लिख लीजिए। Actinomorphic में 3 कौन से, mustard, दतुरा और चिली लिखिए। हाँ, Actinomorphic में 3 एग्जांपल और ऐड, मस्टर्ड, दतुरा और चिली लिखो। एक्टिनोमॉर्फिक में 3 एग्जांपल आप लोग को ऐड करना है, कौन कौन से, मस्टर्ड, दतुरा और चिली। जाइगोमॉर्फिक में पी, गुलमोहर, बीन और केशिया। देखो आप लोगों से है ना, अभी मैं थोड़ा सा वाइवा लूंगा ना, तो सबकी औकात पता चल जाएगी। अभी पढ़ने के नाम पे है ना, अपना सबका अड्डा एकदम 0 बोल रहे हैं। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का आपको कुछ थोड़ा पूछा जाएगा अभी, तो पूरा ऊपर से पता चल जाएगा किसने कितना पढ़ाई किया है ना। सो देयरफॉर डोंट थिंक दैट यू आर वेरी स्मार्ट, वेरी एक्सपर्ट, टैलेंटेड एंड अ पर्सनालिटी हियर। हंस रहे बेटा तुम, शारण पाटिल तुम तो हंस रहे हो। 8 तो तुम्हारे 12 बजाने वाला हूँ मैं। हाँ, you continue laughing yourself. I will laugh afterwards of the class. Class में मैं हंसूंगा, तुम रोओगे। Thank you so much. लिख एग्जांपल आप लोगों ने, वेरी गुड। नाउ ट्राइमेरस टर्म लिख लिया हम लोगों ने,
टेट्रामेरस या पेंटामेरस, these two terms were bracteate and ebracteate। कहीं पर नोट आके लिखो नोट, हमने हेड डाल देगा पोजीशन वाला। ओके देन मैं समझा देता हूँ क्या है ये, आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा। सो फ्लावर का ये स्टॉक, देन देयर वाज थैलेमस, कैलिक्स वाज प्रेजेंट, कैलिक्स के ऊपर क्या प्रेजेंट था ऐसे, कोरोला, पेटल्स, एंड इनसाइड द पेटल्स देयर वर stamens, and inside carpel। यार इस वजह से स्ट्रक्चर में पढ़ा था फ्लावर का। नाउ इफ द ब्रैक्ट इज प्रेजेंट, यहाँ पर अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है देन द फ्लावर इज नोन एज ब्रैक्टिएट। जैसे सेप्टा प्रेजेंट था तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टा प्रेजेंट था तो सेप्टेट। लाइक दैट इफ ब्रैक्ट इज प्रेजेंट फ्लावर इज नोन एज ब्रैक्टिएट, इफ ब्रैक्ट इज एब्सेंट इट इज नोन एज ebracteate। सभी को, if bract is present flower is known as bracteate, if bract is absent flower is known as ebracteate। बस आप लोग इतना रखना है। and then this comes this paragraph। तो ये डायग्राम समझना आप लोग, ये हमारा टॉपिक है, पोजीशन ऑफ rural parts on thalamus। so now there are three categories यहाँ पे, तीन तरह के पोजीशन है। फर्स्ट इज पेरिकाइनस, सेकंड इज एपिकाइनस एंड थर्ड वन इज हाइपोकाइनस। नाउ ईपीआई, एपी मतलब होता है अबव, है ना, आपने पढ़ा होगा एपिपेटलस, है ना, आपने सुना ये वर्ड। सो एपी वर्ड जब भी आता है उसका मतलब क्या होता है, अबव। ईपीआई, एपी मींस अबव, HYPO हाइपो, हाइपो मतलब क्या है, बिलो। एपी मींस अबव, हाइपो मींस बिलो। और पेरी सब लोग मैं से पढ़ाऊंगा, पेरीफेरी, circumference। so peri word is used for circumference, whenever something is present at the boundary it is known as what, peri। so whenever it is above known as epi, whenever it is below known as hypo, and whenever it is present at the boundary it is known as what, peri। now these positions are with respect to ovary, है ना, ovary के respect to positions। so we saw there are two walls, essential walls, एक होता है एंड्रोशन, दूसरा गायनो। तो गायनो का मतलब क्या था, फीमेल, और वुमेन मतलब फीमेल। तो गायनोशियम, तो यहाँ पर ऐड किया गया पेरी गायनस, हाइपो गायनस और एपी गायनस। सो एपी मतलब के अबाव और गायनस का मतलब यहाँ पे ओवरी। क्या मतलब गायनस का, ओवरी। सो ऑल द पोजीशंस आर विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, किस रिस्पेक्ट में है, वेरी गुड। सो इन हाइपोगाइनस, ये वाला डायग्राम है ना, हाइपोगाइनस। सो हाइपो मतलब क्या है, बिलो, हाइपो मतलब क्या है, बिलो। सो ऑल द पार्ट्स आर बिलो ओवरी, ऑल द पार्ट्स आर बिलो ओवरी। तो टॉपिक कौन रहेगा, ओवरी। व्हेन ऑल द पार्ट्स आर बिलो ओवरी मीन सबसे सुपीरियर पोजीशन पे कौन है, ओवरी। सो व्हेन इन अ फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ वॉल्स, व्हेन इन अ फ्लावर अरेंजमेंट ऑफ वॉल्स इन सच अ वे कि ओवरी का पोजीशन सबसे ऊपर है और बाकी सारे वर्ल्स आपको दिख रहा होगा, जो स्टेमन्स है वो भी ओवरी के नीचे आ रहे हैं, जो पेटल्स है वो भी ओवरी के नीचे है, ये जो सेपल्स है वो भी ओवरी के नीचे। सो ऑल द वर्ल्स आर बिलो ओवरी। तो सच अ फ्लावर इज नोन एज व्हाट, हाइपोगाइनस। क्या बोलते फ्लावर को हम लोग, हाइपोगाइनस। सेकंड क्या दिया उन्होंने, पहले हम एपी पढ़ लेते हैं। सो हाइपो मींस ऑल द वर्ल्स आर बिलो ओवरी, एपिगाइनस ऑल द वर्ल्स आर अबव ओवरी। क्योंकि एपी मतलब क्या है, अबव, ऊपर। तो जब सारे वॉल ओवरी के ऊपर है तो दिस इज ओवरी इनसाइड, सबसे नीचे ओवरी है थैलेमस के अंदर। जो बल्जिंग पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस बल्जिंग पोर्शन इज थैलेमस, और थैलेमस के अंदर कौन है, ओवरी। और सारे सारे वॉल किसके अभाव है, ओवरी के अभाव। दिस कैलिक्स इज आल्सो अबाउट द ओवरी, पेटल्स आर आल्सो अबाउट द ओवरी एंड स्टेमन्स आर आल्सो अबाउट। सो व्हेन ऑल द वॉल्स आर अबाव ओवरी कंडीशन इज नोन एज एपिगाइनस, when the walls are below ovary they are known as hypogaynous। और जब all the walls and ovary are near to equal, मतलब कि उनका जो लेवल है not very short and not very long, मतलब कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम भी नहीं है और दोनों का डिस्टेंस बहुत ज्यादा भी नहीं है, वो लगभग एक दूसरे के इक्वल प्लेन पे है, उसको हम बोलते हैं पेरिगाइनस। क्या बोलते हैं, पेरिगाइनस। देखिए ये जो डायग्राम बी और सी दे बोथ रिप्रेजेंट पेरिगाइनस। तो यहाँ पर ये ओवरी है, लेकिन ओवरी के लगभग बहुत ज्यादा कोई नीचे भी नहीं, बहुत ज्यादा कोई ऊपर भी नहीं, दे आर ऑन एन इक्वल प्लेटफॉर्म।
है ना। तो ये थैलेमस और ये थैलेमस के पेरी में प्रेजेंट है स्टेमन, पेटल और सेपल। ऑल द अदर थ्री वॉल्स, थैंक यू सो मच। तो ऑल द अदर थ्री वॉल्स आर प्रेजेंट एट द पेरी। कहां प्रेजेंट है सारे वॉल्स? पेरी पे। इसकी पेरी थैलेमस, इसकी पेरी में दैट इज नोन एज पेरिकाइनस। और यहाँ पे दो डायग्राम क्यों बनाए उन्होंने? तो देयर इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ दिस थैलेमस। यहाँ पे जो हाइट है वो ज्यादा है और यहाँ पर जो हाइट है वो क्या है? So it is little bit ahead, it is little bit below. So there is two diagrams of this perigyne. So hypogynous मतलब क्या है? Ovaries, ovaries, और epigynous मतलब क्या है? Ovaries, और perigynous is they are present at the so heading डाला आप लोगों ने? नहीं, heading लिखिए ovaries to now position of ball with respect to cell. Now first, right now epigynous. When ovary is present within the thalamus, when ovary is present within the thalamus, when ovary is present within the thalamus, and all walls are above ovary, and all walls are above ovary. All walls are above ovary. तो बोलते क्या? एपिगैनस ना, डिफॉल्ट इज एपिगैनस। ये डायग्राम में डी वाला डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए और फिर ड्रॉ दिस डायग्राम डी। इसके बाद एनसीईआरटी आंसर में तो इसे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर कौन से नंबर है? टी डी नींद हो गई चढ़ता है। बहुत सारे लोगों ने कुछ नहीं, बड़े शरारत पड़ रही। रुको भी तो थोड़ा ठंडा ही लाना पड़ेगा तुम लोग के लिए। Next, hypogynous. Next है आप लोगों क्या? Hypogynous. Next is hypogynous. When in a flower, hypogynous
when in a flower, when in a flower, all whorls are present. All whorls are present below ovary. When in a flower, all whorls are present below ovary. बस थोड़ा डायग्राम बनाइए ए वाला। ए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, हाइपोगैनस कौन सा है, पेरिगैनस कौन सा है? कहीं मारूंगा बताओ देश। हाँ 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 हाँ, उससे तो मारा जा रहा है। किसी और की वजह इसलिए मार। सही है तुम्हारी ऐसी बनी नहीं हो रही है ना शारण पाटिल। अभी तो तुमको जस्टिफिकेशन चाहिए, तुमको मुंह चलाना है अपना, बंद नहीं करोगे तुम। थर्ड पेरिगाइनस, कौन मारा जो बताओ, क्या बोला था? हाँ तुम चारों पे चारों आ जाओगे, सार्थक, सायरा, ये देवेश और ये शारण। हाँ बोल लो बेटा, तुम बोलो जितना तुमको बोलना है ना, भी बोल लो। 4 बजने में ज्यादा समय नहीं बचा है। थैंक यू सर। थर्ड आइटम पेरिगाइनस, when पेरिगाइनस, when in a flower, all other whorls and ovary, when in a flower, all other whorls, when in a flower, all other whorls and ovary are nearly on equal platform, nearly on equal level, nearly on equal level. When in a flower, all other whorls and ovary are on nearly on equal level and present on the periphery of thalamus, and present on the periphery of thalamus, present in the periphery of thalamus, present on the periphery of thalamus। हाँ तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हम लोग पेरिगाइनस। क्या बोलते हैं इसे कौन? पेरिगाइनस। तो ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना सभी को। क्या लिखा है? बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट टू ओवरी ऑन थैलेमस। तो सारा जो पोजीशन है वो किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? ओवरी का। कहां पर प्रेजेंट है ये? थैलेमस। दे आर डिस्क्राइब्ड इन 3 टर्म्स, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर गैनोशियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, क्योंकि हाइपो मतलब क्या था? बिलो, गैनस मतलब ओवरी, ऑल ऑफ द पार्ट्स आर बिलो ovary while the other parts are situated below it. The ovary situated, ovary inside flower is said to be superior। लिख लीजिए लो, हाइपोगाइनस में लिखिए ovary is superior। हाइपोगाइनस में क्या लिखना है? ovary is superior, क्योंकि ovary सबसे ऊपर है और बाकी सारे पार्ट्स क्या ovary के नीचे, तो ovary is superior। एग्जांपल क्या है? मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ग्रेप्स। राइट डाउन।
Examples: mustard, chana rose and brinjal. Mustard, chana rose and brinjal. ज्यादा खड़े हो तुम, बेटा बैठना नहीं तुम. मस्टर्ड, चना रोज एंड सोना भी नहीं है. मस्टर्ड, चना रोज एंड ब्रिंजल. फिर if gynoecium is situated in the center and the parts of the flower are located on the rim. rim का मतलब क्या होता है? Periphery. ring का मतलब क्या है? Periphery. Periphery of the thalamus. Almost at the same level. ये लिखा हम लोगों ने. They are present nearly on the same level. It is called what? Perigynous. The ovary is said to be half inferior. लिख लीजिए. Perigynous में ovary is half inferior. Ovary is half inferior. Example है क्या है? Plum, rose and peach. तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने के लिए sufficient है यहाँ पे. ज्यादा तुमको बोल रहा हूँ मैं. Plum, rose and peach. Plum, rose and peach. Now next, last कौन सा बचा? Epigynous. All the walls are above ovary. देख लिया हम लोगों ने. वहां पोजीशन रहेगा ovaries inferior. Epigynous में ovaries inferior. लिख ले सभी ने. Epigynous. Epigynous में ovaries inferior. In epigynous, ovary is inferior. Example: guava, cucumber, and ray florets of sunflower. Guava, ray florets. Now, what is ray florets of sunflower? तो आपने sunflower देखे? तो sunflower में there are multiple flowers. This is not an individual flower. It is a inflorescence. तो inflorescence मतलब क्या है? कि बहुत सारे flowers से गुच्छे को हम लोग बोलते हैं inflorescence. It is also an arrangement of flowers on the branch. है ना? हमने पढ़ा था कि stalk is known as peduncle. कल ही पढ़ा था हम लोग 3 टाइप्स के होते हैं: solitary, racemose and cymons. तो रे फ्लोरेट्स मतलब क्या है कि जो सनफ्लावर में येलो कलर के पेटल्स आपने देखे हैं, दे आर नोन एज रे फ्लोरेट्स, है ना? बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन दी पेरिफेरी. रे, सन की जो रेज है उसी तरह दिखते हैं वो, है ना? सूरज की किरण निकलती है, तो देयर आर रेज कमिंग आउट ऑफ द सन. सो लाइक दैट रे फ्लोरेट्स, है ना? ऐसे आपको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं इन सनफ्लावर. सो दे शो व्हाट टाइप ऑफ ओवरी? दिस epigynous. कौन सा कंडीशन आप पे? epigynous. वेरी गुड. तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर, नाउ हेडिंग डालिए आप लोग. ईच पार्ट हेडिंग डालना है आपको. ईच पार्ट हेडिंग डालना है आपको. हेडिंग ईच पार्ट, हेडिंग है ये, है ना? ईच पार्ट ऑफ फ्लावर, ईच पार्ट ऑफ फ्लावर, each part of flower and its wall. Each part of flower and its wall. WHORL, wall. Each part of flower and its wall. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कैलिक्स. तो लिखिए कैलिक्स. इट इज अ ग्रीन part of flower. It is green part of flower composed of, बताइए कैलिक्स का इंडिविजुअल पार्ट क्या है? सेपल्स. So calyx, it is a green part of the flower made up of sepals. It is a green part of the flower made up of sepal. ब्रैकेट में लिखना है इंडिविजुअल यूनिट. क्या लिखना है ब्रैकेट में? इंडिविजुअल यूनिट. It is a green part of the flower and individual unit is sepal. Individual unit is sepal. Individual unit is sepal. Performing photosynthesis. Performing photosynthesis. क्या परफॉर्म करता है ये? ग्रीन है, बता आप लोगों को. Have chlorophyll pigment, so performs photosynthesis. Now very important, आप लोगों ने टमाटर में देखा होगा
कि the sepals are present in a fused condition. Sepals are present in what condition? Fused. They are not free. And same with brinjal, if you have seen. So brinjal is there. तो अपने जो सेपल्स है ना, अपने फ्यूज देखे होंगे. So when sepals are fused, they are known as gamosepalous. क्या बोलते हैं इनको हम लोग? Gamosepalous. लिखिए gamosepalous, लिखिए टर्म लिखिए ऐसा gamosepalous. नहीं ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ हेडिंग लिखिए आप लोग gamosepalous. When sepals are fused, देखिए sepals united. When sepals are fused, it is known as what? Gamosepalous. When sepals are fused, it is known as gamosepalous. सेकंड आ जाएगा polycephalous. When sepals are fused, तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Gamosepalous. Next is polycephalous. तो polycephalous में sepals are free, they are not united. तो जहां भी वर्ड आएगा गैमो, आपको याद रखना है फ्यूजन की बात हो रही है, और जहां भी वर्ड यहाँ पे आएगा पॉली, मतलब वो कैसे हैं? फ्री, दे आर नॉट यूनाइटेड. तो गैमोसेपलस, सेपल्स आर फ्यूज्ड, पॉलीसेपलस, सेपल्स आर फ्री. लिख लिया सभी ने? हाँ. नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग कोरोला. नेक्स्ट हेडिंग क्या जाएगा? कोरोला. लिख लिया सभी ने कोरोला? हाँ. Colorful part of flower. Colorful part of flower. Colorful part of flower made up of petals. Made up of petals. Colorful part of flower made up of petals to attract insect pollinators. To attract insect pollinators. Made up of petals. Made up of petals. कोरोला का सिंगल यूनिट क्या था? Petals. Made up of petals to attract insect pollinators. Now petals किस तरीके से अरेंज्ड है उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन. हाँ, इसी में भी हेडिंग डालिए आप लोग एस्टिवेशन. कोरोला के अंदर ही सब हेडिंग डालना है आपको एस्टिवेशन. Now what is estivation? So it is arrangement of petals. Arrangement of petals उसको बोलते हैं estivation कि petals किस तरीके से अरेंज. Now there are 5 types of estivation. ठीक, इतना लिख लिया सभी ने? हाँ. तो एस्टिवेशन का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स. नाउ 5 तरह का है, तो मैं ध्यान से सुनना सभी को. पहला होता है वेलवेट. व्हाट इज द फर्स्ट टाइप? वेलवेट. सो नाउ इन वेलवेट एस्टिवेशन पेटल्स ऑफ कोर्स अरेंज इन सर्कुलर पैटर्न. पेटल्स किस तरीके से अरेंज है ना? सर्कुलर पैटर्न विदाउट टचिंग ईच अदर. मतलब जो पेटल्स है वे दूसरे को टच नहीं कर रहे और ना ही कोई ओवरलैपिंग है. मतलब जैसे आपने रोज में देखा होगा, रोज में एक पेटल दूसरे पेटल को क्या कर लेता है? ओवरलैप कर लेता है ना. हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलता. ईच पेटल इज फ्री एंड इंडिविजुअली सेपरेट, क्योंकि वो दूसरे पेटल से अलग है. किसी भी पेटल का दूसरे पेटल के ऊपर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं. उसको कौन सा बोलते हैं? एस्टिवेशन वेलवेट. सेकंड इज ट्विस्टेड. सेकंड एस्टिवेशन क्या है? ट्विस्टेड. नाउ ट्विस्टेड में एवरी पेटल, अब सभी पेटल के 2 एंड्स हैं. एवरी पेटल हाउ मेनी एंड्स? 2 एंड. सो वन एंड ऑफ द पेटल इज अबव द अदर पेटल.
हर एक पेटल का एक एंड दूसरे पेटल के एंड से क्या है, ऊपर. सो दिस वन पेटल, सेकंड ये वाला पेटल का एंड नीचे आ गया, ये वाले पेटल का एंड ऊपर है. समझ में आता है सभी को? नाउ दिस पेटल हैज आल्सो वन एंड अबव एंड वन एंड बिलो. तो हर एक पेटल का क्या हो रहा है, हर एक पेटल का एक एंड जो है वो एक पेटल के ऊपर है और एक एंड दूसरे पेटल के नीचे. उसको कौन सा एंड बोलते हैं हम लोग, ट्विस्टेड. So this is below, this will be above, this is below, this will be above, this is below, this will be above. तो जब ऐसा अरेंजमेंट है हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, twisted. First one is velvet. All the petals are arranged in circular pattern with an individual. कोई भी overlapping नहीं, लेकिन यहाँ पे overlapping. Now the third is imbricate. Third is imbricate. Now in imbricate, three petals are showing twisted arrangement. Twisted में क्या हो रहा है, एक एंड above और एक एंड below. This petal ये above हो गया, this is below. तीन petals हो गए. तीन petals कौन सा शो करते हैं, twisted. और दो petals में से एक petal completely inside, एक petal completely outside. How is it? Please. One, two, three. यहाँ से देखना है. These three petals twisted. This petal is outer and this one is, है ना, एक पेटल कंप्लीटली आउटसाइड है, एक पेटल कंप्लीटली इनसाइड, और तीन पेटल कौन से मैनर में, twisted. तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज व्हाट, imbricate. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, imbricate, है ना. और लास्ट वन फोर्थ. तो जो पी प्लांट हमने देखा था, पी प्लांट का फ्लावर दिखा, पी ब्लू कलर का फ्लावर दिखा था आपको अभी. तो उसमें यू हैव वन स्टैंडर्ड, है ना, एक पेटल कंप्लीटली बाहर, दो पेटल विंग्स की तरह है एंड टू आर कील. आप लोगों को इसमें दिखेगा. देखो ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, वेलवेट, है ना. ऑल पेटल्स आर इंडिविजुअल, दे आर सेपरेटेड. सेकंड वन इज ट्विस्टेड, थर्ड वन इज imbricate. एंड डालिए आप लोग एस्टिशन लिया था ना, एस्टिशन लिखिए. फर्स्ट वेलवेट, देखिए फर्स्ट वेलवेट, अच्छा टाइम हो गया है, ओके. Many times I have told you all these things, but again I am repeating. Please behave properly. Don't think that class is a place where we come for entertainment. I, of course, joke with all of you. Reason being, many of the students does not have capacity to understand things. Very honestly, I am saying this. Many students are there who are very dull-minded. So, as a demotivated लग रहा होगा आप लोगों को सुनने में, but it is true. For us today, because of media, students का focus का जो time पर बहुत कम हो चुका है. More than 40 minutes, nobody has concentration power. 40 मिनट के बाद सबका जो सर्कुलेट दिमाग का ढीला हो जाता है. To sit for 1.5 hour class is very difficult for anyone. Therefore, I joke with all of you so that a person remains a little bit attentive in the class. Don't take it otherwise. The teacher is trying to be frank with all of you.